शानदार है। तो यहाँ पे नेपाल के फैंस के लिए काफी खुशखबरी है। एनआरआर पॉइंट का काफी अच्छा देखने को मिला है अब तक का। और कनाडा की बात करूंगा तो उनका माइनस में देखने को मिल रहा है 0.446। तो दोस्तों बात करेंगे इस मुकाबले की। 1 अक्टूबर 2024 रात में 9:30 बजे ये मैच चालू हो जाएगा मैपल लीग क्रिकेट ग्राउंड ओंटारियो में। इस तरह से आप देख पा रहे हो रात का माहौल है और आपके सामने यहाँ पे ड्रोन कैमरे से आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। वार्म अप चालू हो चुका है दोनों ही टीम का, नेपाल और कनाडा की टीम का। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी ये लाइव टेलीकास्ट दोस्तों आज मैंने परमिशन ले ली है, तो निश्चिंत रहिए लाइव टेलीकास्ट आज आपको इसी चैनल में हम दिखा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स की। उससे पहले बात करेंगे नेपाल की और कनाडा के पिछले 5 मैचेस के फॉर्म की। 5 मुकाबलों की अगर बात करूं नेपाल टीम की दोस्तों, तो पिछले 5 मुकाबलों में 4 मैचेस नेपाल ने हारे हैं और 1 मैच जीता है, जो पिछला मैच जीता था ओमान से। वहीं बात करें कनाडा टीम की तो 2 मैचेस जीते हैं पिछले 5 मैचेस में और 3 मैचेस हारे भी हैं। दोस्तों दोनों की हेड टू हेड की बात की जाएगी। अगर हेड टू हेड एक वो रिपोर्ट्स होती है जहां पे आपको पता चलता है कि नेपाल और कनाडा के बीच में प्रीवियस जो मैचेस हुए हैं उसमें कौन सी टीम जीती है कौन सी टीम हारी है। तो यहाँ पे पिछले 2 मुकाबलों की बात करूंगा, कनाडा ने मैचेस जीते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला भी जीता था और T20 वर्ल्ड कप 2024 का वार्म अप मैच था वो भी कनाडा ने जीता। तो नेपाल को अब कनाडा को हराना चालू करना चाहिए 2024 की अंत में, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है, मात्र इसके बाद 2 महीने रह जाएंगे। तो एटलीस्ट 2024 में मेरे हिसाब से नेपाल टीम को कनाडा को एक हार तो देनी चाहिए और ये आज मौका है, सुनहरा मौका है। अगर आज नेपाल कनाडा को हराती है तो 2024 में पहली जीत नेपाल के नाम दर्ज हो जाएगी कनाडा के सामने। आइए बात करेंगे दोस्तों टीम कंपैरिजन। तो टीम कंपैरिजन आपके सामने दिख रहा है। या टीम कंपैरिजन में हम दोस्तों बात करते हैं विनिंग रेशो की, एवरेज स्कोर की, हाईएस्ट स्कोर की और लोएस्ट स्कोर की। दोस्तों बात करूंगा नेपाल टीम की तरफ से, अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूंगा तो 181 रन का है, मगर कनाडा का 194 का है। एवरेज स्कोर की बात की जाएगी, नेपाल टीम का 136 रन का एवरेज स्कोर देखिए, वही कनाडा टीम की बात करूंगा 144 रन का। यहां बात की जाएगी नेपाल शानदार है, हाईएस्ट स्कोर इसी मैदान में नेपाल का पिछले 2 मुकाबलों में 176 रन का देखने को मिला है। और वहीं पे हाईएस्ट स्कोर की बात करूंगा कनाडा की, मात्र 138 रन का। तो ये पिच काफी ज्यादा फेवरेबल है नेपाल टीम के लिए। आइए बात करेंगे वेदर फोरकास्टिंग की दोस्तों, क्योंकि आज वेदर फोरकास्टिंग की अगर आप लोगों से बात करूं, सभी से बात करूंगा, हेलो मेरे भाइयों क्या हालचाल, सभी लोग अब निश्चिंत रहिए, सभी के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और आप लोगों से बातें भी की जाएगी। आज बात करेंगे वेदर फोरकास्ट की दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूंगा उससे पहले बता दूं, वेदर फोरकास्ट काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और लगभग 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है। 94% 94% यहाँ पे उमस बताई गई है। 94% दोस्तों ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, जिस कारण आपको पता है, आपने भी देखा होगा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जब जब उमस होती है तो बारिश की संभावना ज्यादा होती है। तो लगभग यहाँ पे बारिश की संभावना 40 से 50% के बीच की बताई जा रही है। तो मोस्टली क्लाउडी है, मतलब बादल छाए हुए, कभी भी बारिश हो सकती है। अब वो मैच के पहले हो, मैच के बीच में हो या मैच के अंत में हो। तो इसलिए अपनी फैंटेसी लीग्स की जो टीम्स बना रहे हो, थोड़ा सा बारिश की संभावना ज्यादा होती है तो के अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि क्या पता जो बल्लेबाज आपने लिया हो वो उसको खेलने का मौका ही ना मिले। तो आज थोड़ा सा फोकस करना मेन गेंदबाजों पे और ऑलराउंडर पे थोड़ा कम फोकस करना। आज बात करेंगे दोस्तों वैल्यू स्टेटस, इसलिए अपनी फैंटेसी लीग्स की जो टीम्स बना रहे हो, यहाँ पे अगर मैं लोवेस्ट टोटल की बात करूंगा तो आपको पता है यहाँ पे लोवेस्ट टोटल 106 रन का है कनाडा और ओमान का, जहां पे कनाडा टीम ने 106 रन बनाए थे। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे नेपाल का 176 रन का, हाईएस्ट 107 रन अब तक हो पाया, मात्र 138 बनाए थे ओमान ने, बट
पाए थे। आइए बात करूंगा तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज की। उस चीज की रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई लोग चीज की रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई लोग आ चुके हो, सबसे पहले तो आप लोग आते हो, कमेंट्स करते हो, वोट करते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हो। चलिए दोस्तों, जितने भी मेरे दर्शक जुड़ चुके हो, एक साथ मिलके लाइक का बटन दबा दीजिए और एक साथ मिलकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए शानदार गिव अवे लेके आया हूं जो आपको टेलीग्राम में देने वाला हूं। गिव अवे में दोस्तों अप टू 5000 तक का बोनस मिलेगा इंस्टेंट, और आपको करना कुछ नहीं है। गिव में टॉप चैट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उससे पहले ज्वाइन करने से पहले बता दूं, आपको लाइक सब्सक्राइब करना कंपलसरी है और अपने अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है, भले वो फेसबुक में करे या इंस्टाग्राम में करे, टेलीग्राम में करे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप चैट में पिन कर रखा है, जाइए टेलीग्राम में मैं लिंक पिन कर दूंगा जब मैच चालू हो जाएगा दोस्तों। वहां पे आपको शानदार अप टू 5000 का गिव अवे रहेगा बोनस का आज के मैच का। तो देखो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं बेफिक्र रहा हूं, मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूं, कंपनी दे रही है, तो कंपनी का फायदा उठाओ, अपना अपना बोनस उठाओ। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बहुत जरूरी। चलिए बात करेंगे थोड़ी सी रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत जल्दी मैच लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। आइए थोड़ा सा आपको बता दो रिपोर्ट्स की, बॉलिंग पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों इस पिच की अगर बात करूं तेज और स्पिन गेंदबाज की, तो तेज गेंदबाज काफी ज्यादा सक्सेस है, तेज गेंदबाज का बोलबाला काफी ज्यादा देखने को मिला है। तेज गेंदबाज हमेशा विकेट यहां पे निकालते हुए नजर आए हैं, क्योंकि नई गेंद से अतिरिक्त उछाल देखने को मिलेगा, अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलेगा। बल्लेबाज शुरुआत में काफी परेशान होते हैं, और आपने देखा होगा पावर प्ले में विकेट्स काफी ज्यादा निकलते हुए नजर आते हैं। तो यहां पे शुरुआत में अगर बल्लेबाज अपने आप को सेट होने का टाइम देता है तो ऑब्वियसली बात है एक बड़ा भी बना सकता है, बट देखते हैं। चलिए, नेपाल और कनाडा का चौथा मुकाबला आज इस सीरीज का हो रहा है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताइए मुझे, मैं सबके नाम पढ़ना चाहता हूं। चलिए थोड़ी सी रिपोर्ट की बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों बात करें कुछ पिच रिपोर्ट्स के बारे में, उससे पहले बता दूं कनाडा और नेपाल टीम का मैच, जिसमें से आज दोनों ही टीम शानदार इस लीग में प्रदर्शन दिखा रही है, जिसमें शानदार कनाडा का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए बात 11 की, तो अनिल नेपाल टीम की तरफ से अनिल शाह, आशिफ शेख, खनल, कुशल मल्ला, रोहित पोदेल, कुशल भुटेल, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित जो कि yesterday really set things up nicely. Got all 3 teams with everything to play for, and that's what Canada getting in those final words in the huddle and ready to take the field, led by their captain Nicholas Curtin. It's good to see Harshtaker out there. We know he picked up a bit of a knock on his knee yesterday, and so he seems to have recovered. And looking at the change made to the side, Aaron Johnson has been struggling with his form and again unable to get going yesterday. Any surprise there? It's been a tough one up at the top for Canada in the T20 setup, hasn't it? Both he and Navneet Dhaliwal have struggled. Now, Dilpreet Bajwa, who is genuinely an exceptional T20 player, slotted to come in at number 3. He's not been able to kick on in that first game yesterday. Involved in an unfortunate run out, but something about the combination just isn't quite panning out for Canada with Aaron Johnson and Navneet Dhaliwal in the T20 setup. I mean, do I agree with whether Aaron Johnson should sat out today or not? Well, that's up for question. It really, sometimes form is a tricky thing and you don't know how quickly you can jump right back in, you know, so it's been a struggle for both openers. It's definitely not been going for Canada at the top, which means it's putting a lot of pressure lower down. But looking at the Nepal openers and looking at the Nepal batting lineup, we've seen a completely different side from the T20s than we have from the ODI side, haven't we? Very difficult. Just very hesitant, very defensive in their gameplay in the 50 over cricket. What T20 cricket, they've completely turned it out. In fact, the runs that they piled on against Oman
2 games ago for them. 170 odd on these pitches is very difficult. In case you're hearing what that background noise is, that's Canada geese. Yes, that's what they're called. Canada geese flying over the corner from winter. That's true. I mean, it's not yet time for the jackets, but they're reminding us that it's coming. Winter is coming. Well, I think they're just a bit confused with all this warm weather we've had. They're going the wrong direction at the moment. But you're right. Nepal will be looking for a strong start here. Kalim Sana will be looking to deny that, obviously. He's been in some very good form. Picked up the Player of the Match award when these two sides met last. And we'll see if he can repeat that performance here. Well, it starts with a bit of a wayward delivery, and it's helped along the way by Anil Shah. Bit of a nothing delivery that. Anil Shah's off the mark, and we've just seen the first boundary of this innings. A little bit of movement there as well early for Kalim Sana. 2 batters for Nepal. It's Anil Shah and Asif Sheikh. Nicely flicked away there. And just the start you want as an opening batter. Easy pickings onto the pads. And so we'll take that all day. Just a nice little flick. Able to beat the man at fine leg. Back to business from Kalim Sana. Good line, good length on that occasion. Good angle as well, going across to the right-hander. Shaping it back away that time. Came in with the first delivery. Now trying to find a rhythm for himself, and so shapes it away from the batter. Tried to see if Shah would go after that one. He comfortably leaves it alone. But no surprises that Nepal have stuck to these two as their opening pair. Quite successful, getting a decent start against Oman. Well, half a shout. Looked like he was going down leg. 27 apiece to both of these openers against Oman as they gave their team a good start. And now we get a look at this replay here. Where's that pitching? Might be outside leg, just outside. Shaping. That's putting question marks for Shah, because we've seen Sana go in, we've seen Sana go out. So he's got to be on his toes, trying to figure out which one's coming in, which one's coming out, and getting him on the back foot there, but he survives. Oh, that's an absolute beauty of a delivery. Missing everything. Bat, stump, and straight through to the keeper. Terrific delivery there. You look at Sana bouncing back exactly the way you'd hope for Canada fans after that first ball. Wayward first ball for easy pickings down to the boundary, but the 3 deliveries since he has tested Shah very, very well. And again, that ball shaping back in. Shah uncertain about when it's going away, when it's coming back into him. And he's been defeated a couple of times. Still hanging in there. Oh, poor delivery again. And it does race away to the boundary. That's 2 boundaries in this first over. Both deliveries quite wayward, going down leg. Sana won't be happy about that. Pretty similar to the first delivery of this innings. You just let the batter off the hook there after a few good deliveries and takes the pressure off. You've already got now 8 off this over. And you try to come back here with a good delivery, but you know that Shah doesn't need to take any undue risk here with the final delivery, having got 8 off the over now. Look, we're expecting the conditions to be difficult to bat here first. Overcast, and King City's normally difficult to bat if you're batting first. But that bowler
back into the right-hander, and that struck him. He's copped that one pretty well. Anil is down for the count. He is... for a batter. Got the trainer out, checking up on him. Looks like he might be getting his win back. I'll let you talk us through this one. Well, it's tough. While we get a replay going for you, 1 over, the first over gone. Nepal 8 for no loss, and he's back on his feet. Anil Shah. Looks like the saws are in place, ready to go. Here's the replay coming in. Ooh. That has got him square in the saws. Well, listen, we had this conversation a couple of days ago, and I just... non-strikers for a little while. Yeah, I don't think there'll be any quick singles anytime soon. But still inhaling, big man into the attack, and Asif Sheikh off the mark quickly. First delivery in, and he picks up a single. We see Canada taking a bit more conventional route here. We saw the first 2 matches, Canada going with Parveen Kumar's left arm orthodox to open alongside Kaleem Sana, and now they go back to Dylan Haliger. Good to see him up and running after the ankle knock he picked up. And Anil Shah seems the least bit bothered by that injury that he got in that first over. Good pressure this to the big man Dylan Haliger, though. As we got to look at the replay here. Brilliant straight drive. Right in the slot and goes straight down the ground. Beautifully lofted over, and that's some sweet revenge. Back live now and sent back. Anil Shah looking to quick single. That was a good looking stroke. He wasn't over pitch. He actually went deep in his crease to give himself that extra bit of room. And that's the innovation that you want to see in T20 cricket. Creating opportunities, putting the batter under pressure. And there's the injury from the first over. Well, that is even better than the first one. Straight down the ground and 6 more runs. Anil Shah, he says, forget the overcast, forget the difficult conditions. I'm going to make the most of this. 6 more added to the total. Overcast or not, a bad ball's got to go to the fence. And you look at this, right in the slot. And Anil Shah taking full advantage of beautiful, free-flowing bat there. Look at that shape. Perfect execution. He knew it the second he hit it. That was going straight to the sight screen. It's a positive start from Nepal. 21 runs. Still not done the second over. Keep going in a manner where they're safe with their shots, hit the right spots in the field. They should be all right. The last thing they want to do is take risks in unnecessary fashion, lose wickets. And that's kind of where things started to fall apart for them in the ODI series, isn't it?
And especially here, when you look at Asif Sheikh at the other end, having faced one delivery so far, he'll be thinking, well, look at the way Shah's going. I'll just give him the strike. Shah's not